Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is for mathematics class third, chapter 5, measuring capacity. This is our lecture number. Topics to be covered: word problem, exercise 5D. Mixed sums. Exercise 5E. Exercise 5D. First of all, we will solve exercise 5D, word problem sums. Question number 3. There are two water tanks on the terrace of a building. One tank can hold 75 liter 855 milliliter of water, and the other can hold 69 liter 746 milliliter of water. What is the total capacity of both the tanks? So beta, what will you do in this question? आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे? First of all, I will tell you Hindi. Then you can easily come to know कि आपको इस सम में क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. ओके, लेट्स सी. बेटा, दो वाटर टैंक हैं एक बिल्डिंग की टेरेस पर. ओके, एक टैंक में 75 लीटर 850 मिलीलीटर पानी है और दूसरे टैंक में 69 लीटर 746 मिलीलीटर पानी है. मीन्स एक टैंक 75 लीटर 855 मिलीलीटर पानी होल्ड कर सकता है और दूसरा टैंक 69 लीटर 746 मिलीलीटर पानी होल्ड कर सकता है. तो आपको ये बताना है कि उन दोनों वाटर टैंक की जो है वो टोटल कैपेसिटी कितनी है. तो हम क्या करेंगे बेटा? वी विल डू एडिशन हियर. Let's start solution. Okay, first of all, we will write the given units, liter or milliliter. Then we will write this 75 here at liter place and 855 at milliliter place. See, 75 at liter place, 855 at milliliter place, and here we will put a plus sign. Okay, now we will write this 69 at liter place and 746 at milliliter place. Okay, now we will add them. 5 plus 6, 11. We will write 1 here and carry 1 here above 5. 5 plus 4, 9. 9 plus carry 1, 10. Right? 0 here and carry 1 here above 8. 8 plus 7, 15. 15 plus carry 1, 16. Right? 6 here and carry 1 here above 5. 5 plus 9, 14. 14 plus carry 1, 15. We will write 5 here and carry 1 here above 7. 7 plus 6, 13. 13 plus carry 1, 14. We will write 14 here. Okay, now our answer is 145 liter 601 milliliter. Clear beta? Now beta, in exercise 5D, we will solve word problem sums. Question number 4. Prabhakar puts 25 liter of petrol in the car at the beginning of the journey. At the end of the journey, 11 liter 200 milliliter of petrol is
left in his car? How much petrol was used during his journey? Clear, beta? First of all, I will tell you Hindi of this given question. Okay. Prabhakar is the name of a boy. प्रभाकर ने जर्नी की बिगनिंग में अपनी कार में 25 लीटर पेट्रोल डलवाया। ओके। और जर्नी के एंड में उसकी कार में 11 लीटर 200 मिलीलीटर पेट्रोल बच गया। अब आपको ये बताना है कि जर्नी के टाइम उनका कितना पेट्रोल यूज हुआ। देन व्हाट विल वी डू हियर? Yes, we will do subtraction here. First of all, we will write solution here. Okay. Then we will write the given units liter and milliliter. Okay. और हम लीटर के नीचे क्या लिखेंगे? 25. C. लीटर, मिलीलीटर और लीटर के नीचे हम क्या लिखेंगे? 25. Okay. Now here we will put minus sign. Then here at liter place we will write 11 and at milliliter place we will write 200. See, at liter place 11, at milliliter place 200. Now we will subtract them. Okay, see here beta, above 0 there is no digit. 0 के ऊपर कोई भी digit नहीं है. So we will put a 0 here. 0 minus 0, 0. Right? 0 here. Here also above 0 there is no digit. So we will put a 0 here. Okay, 0 minus 0, 0. We will write 0 here. Here 2 is written. Above 2 there is no digit. So we will put 0 here. But beta here 0 is written. Here 2 is written. We can't subtract 2 from 0. क्योंकि 2 बड़ा है 0 छोटा है। Then this 0 will take 1 borrow from this given number 5. अब जब ये 5 अपना 1 इस 0 को देगा, then this 5 will become 4 and this 0 will become 10. See. Clear? Now we can easily subtract this 2 from 10. 10 minus 2, 8. We will write 8 here. Now 4 minus 1, 3. Write 3 here. 2 minus 1, 1. Write 1 here. Our answer is 13 liter 800 milliliter. अब जर्नी के समय उनका कितना पेट्रोल यूज हुआ? 13 liter 800 milliliter. This is our answer. Clear beta? Now beta, we will solve exercise 5E mixed sums question number 2. A vessel contains 845 liter 389 milliliter of water. 3 families take 152 liter 157 milliliter, 295 liter 870 milliliter and 92 liter 350 milliliter of water from the vessel respectively. How much water is left in the vessel? Clear? I just want to tell you Hindi of this given question. बेटा एक वेसल होता है पतीला, पतीले में पानी है 845 लीटर 389 मिलीलीटर, ये पतीले में टोटल वाटर है जो। ओके। और बेटा 3 फैमिलीज उस पतीले में से पानी निकालती हैं। फर्स्ट फैमिली निकालती है पानी उसमें से 152 लीटर 157 मिलीलीटर, सेकेंड फैमिली 295 लीटर 870 मिलीलीटर और थर्ड फैमिली 92 लीटर 350 मिलीलीटर। ओके। अब आपको ये बताना है कि उस पतीले में अब कितना पानी बच गया। ओके। सो व्हाट विल यू डू हियर बेटा? दीज आर मिक्स्ड सम्स। ओके। इसमें आप पहले जो पानी जो है फैमिलीज उस पतीले में से लेती हैं, तीनों फैमिलीज, उन तीनों के लीटर मिलीलीटर के नंबर को
प्लस करोगे आप। ओके, जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को आप जो पतीले में टोटल था वाटर जो वो वेसल कंटेन करता है उसमें से आप माइनस कर दोगे। ओके, let's start solution. First of all, we will write the given units: liter, milliliter. Here we will write लीटर के प्लेस पर हम यहाँ पर लिखेंगे 152 लीटर, ये वाला. Then we will write 157 at milliliter place. Clear? Here 295 liter, 870 milliliter is written. So beta, we will write 295 at liter place, 870 at milliliter place. Before writing down these numbers at their places, we will put here plus sign. Okay, then we will write 295 here and 870 here. Now again we will put a plus sign here. Then we will write this 92 at liter place and 350 at milliliter place. 92 at liter place, 350 at milliliter place. Now we will add them. Okay, 7 plus 0, 7. 7 plus 0, 7. Right, 7 here. 5 plus 7, 12. 12 plus 5, 17. Right, 7 here. And carry here above 1. 1 plus 8, 9. 9 plus 3, 12. 12 plus 1, 13. Right, 3 here and carry 1 here above 2. 2 plus 5, 7. 7 plus 2, 9. 9 plus carry 1, 10. Right, 0 here and carry 1 here above 5. 5 plus 9, 14. 14 plus 9, 23. 23 plus 1, 24. Write 4 here and carry 2 here above 1. 1 plus 2, 3. Here below 2 there is no digit, so we will put a 0 here. 3 plus 0, 3 plus carry 2, 5. Write 5 here. बेटा अब जो तीनों फैमिलीज ने पानी लिया उस वेसल में से वो कितना लिया उन्होंने 540 लीटर 377 milliliter. Now we will subtract this 540 liter 377 milliliter from 845 liter 389 milliliter. First of all we will write units. पहले हम यूनिट्स लिखेंगे, फिर हम लीटर के नीचे लिखेंगे 845. ओके, और मिलीलीटर के नीचे लिखेंगे 389. सी, लीटर मिलीलीटर पहले हमने यूनिट लिखे, फिर हम लीटर के नीचे लिखेंगे 845. देन हियर वी विल राइट एट मीटर प्लेस 389. हियर वी विल पुट minus sign. Okay, then here at liter place means below 845 we will write 540. Okay, and here at milliliter place below 389 इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 377. Clear? Now we will subtract them. 9 minus 7, 2. Write 2 here. 8 minus 7, 1. Write 1 here. 3 minus 3, 0. Write 0 here. 5 minus 0, 5. Write 5 here. 4 minus 4, 0. Write 0 here. 8 minus 5, 3. Write 3 here. अब बेटा उस वेसल में कितना पानी बच गया 305 लीटर 12 milliliter. See, our answer is 305 liter 12 milliliter. Clear? Understood beta? In this way you have to do all sums of exercise 5E carefully. पहले आपने क्वेश्चन की हिंदी बनानी है, उसको अच्छे से समझना है, then you have to solve the sum. Okay? Now today's homework is do exercise 5E question 3 and question 4 in notebook. Question number 3. My father bought 32 liter of petrol from the
petrol pump. He put 10 liter 225 milliliter in the scooter and 17 liter 750 milliliter in the car. How much petrol is left with him? Understood बेटा. You have to read this question carefully. पहले आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, इसकी हिंदी बनानी है. Okay, then you have to solve this question. Okay. Question number 4. Madhu bought 18 liter 822 milliliter of oil from the market. She consumed 7 liter 385 milliliter of oil and 2 liter of oil got spoiled. How much oil is left with her now? क्लियर. कंज्यूम्ड होता है बेटा यूज होना, खर्च होना, यूज होना. स्पॉइल्ड होता है खराब होना. ओके बेटा, दीज आर मिक्स्ड सम्स. ओके, एंड यू हैव टू डू दीज सम्स केयरफुली. Now beta we will discuss homework solutions exercise 5B, which I had assigned in the previous lecture. Question number 2. Find the sum. Part A 148 liter 310 milliliter, comma 23 liter 200 milliliter and 67 milliliter. आपने इसका क्या निकालना था? सम. मीन्स आपने इनको प्लस करना था. You all have already done this sum. Then just you have to cross check. First of all, we will write the given units, liter and milliliter. Okay, then we will write the given numbers at their places. Here we will write 148 at liter place, 310 at milliliter place. Then we will put a plus sign here. Now we will write 23 at liter place, 200 at milliliter place. Again we will put a plus sign here, and at last we will write 67 here at milliliter place. ओके क्योंकि यहाँ पर देखो लास्ट में 67 मिलीलीटर लिखा हुआ है. देन वी विल राइट 67 एट मिलीलीटर प्लेस. नाउ वी विल ऐड देम. ओके, 0 plus 0 0, 0 plus 7 7, right? 7 here. 1 plus 0 1 plus 6 7, right? 7 here. 3 plus 2 5, here below 2 there is no digit, so we will put 0 here. Okay, 5 plus 0 5, we will write 5 here. 8 plus 3 11, here below 3 there is no digit, so we will put 0 here. 11 plus 0 11, so we will write 1 here and carry 1 here above 4. 4 plus 2 6, here below 2 there is no digit, so we will put 0 here. 6 plus 0 6 plus carry 1 7, we will write 7 here. Here 1 is written, below 1 there is no digit, so we will put 0 here. 1 plus 0 1, here below 0 there is no digit, so we will put 0 here again. 1 plus 0 1, we will write 1 here. Our answer is 171 liter 577 milliliter. Understood? Have you cross checked beta? Very good. Now beta, in homework solutions we will discuss exercise 5C. Question number 3. Subtract the following. Part B. 136 liter 82 milliliter from
467 लीटर 22 मिलीलीटर। बेटा हमें 136 लीटर 82 मिलीलीटर को 467 लीटर 22 मिलीलीटर में से माइनस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन यूनिट्स liter milliliter. Now here at liter place we will write 467, at milliliter place we will write 22, then we will put minus sign here. So at liter place we will write 136 and at milliliter place we will write 82. Okay beta. Now before solving this sum I just want to tell you one thing which is very important for you beta. बेटा here see at milliliter place there are two digits. milliliter के place पे दो digit दिए हुए हैं. देखो आप 22 में भी only two digits are there. In 82 only two digits are there. But beta we have to write three digits at milliliter place. हमें हमेशा we have to always write. हमें हमेशा milliliter के place पर 3 digit लिखने होते हैं. Why? Because 1 liter equal to 1000 milliliter and in 1000 there are 3 zeros. तो हमें मिलीलीटर के प्लेस पर 3 डिजिट लिखने होते हैं. बट हियर इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर टू डिजिट्स. सो व्हाट विल वी डू? हम क्या करेंगे? यहाँ 2 से पहले 22 में 2 से पहले 0 लगा देंगे और 82 में 8 से पहले 0 लगा देंगे. ओके बेटा, सी. Now we will subtract them. Clear? 2 minus 2, 0. Write 0 here. Here 2 is written. Here 8 is written. We can't subtract 8 from 2. क्योंकि 2 छोटा है, 8 बड़ा है. Then this 2 will take 1 borrow from this given number. But this given digit is 0. पर ये तो खुद ही 0 है. Then this 0 will take 1 borrow from this given number 7. अब ये 7 क्या बन जाएगा? 6 and this 0 will become 10. See. Clear? Now this 2 can easily take 1 borrow from this given number 10. अब जब ये 10 अपना 1 इस 2 को देगा then this 10 will become 9 and this 2 will become 12. Understood? Now we can easily subtract 8 from 12. 12 minus 8, 4. Write 4 here. Okay? 9 minus 0, 9. Write 9 here. 6 minus 6, 0. Write 0 here. 6 minus 3, 3. Write 3 here. 4 minus 1, 3. Write 3 here. Now our answer is 330 liter, 940 milliliter. This is our answer. Have you cross-checked beta? Very good. Thank you.